Good evening students. Today we'll see the line by line explanation for the lesson Pani Amrut Hai, lesson 13 class 4 new Gunjan book. If you still not subscribe my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please put in the comment section. I'll surely reply back. If you like the video or the video is useful for you, please click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos for you. Hope you have seen the previous video, the line by line reading of the lesson. If not, I'll give the link in the description box. Please watch the video along with the book and check your pronunciation. Today we'll do the line by line explanation. Before getting into the lesson, we'll do a quick introduction. बातों बातों में जीवित रहने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? So what are the things that is necessary to be alive? உயிர் வாழறதுக்கு என்ன தேவை? Yes, food, water, shelter. प्रकृति के 5 तत्व कौन कौन से हैं? What are the 5 elements of our nature? Land, water, air, space, fire. पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश. पानी प्रकृति का अनमोल उपहार है. So the water is the unmol. It doesn't priceless. அதுக்கு ப்ரைஸே கிடையாது. Very precious, right? उपहार is a gift from the nature. इसके बिना जीवन संभव नहीं. Without water, life cannot exist at all. That's why in the solar system, if you see only in the earth, life exists. Because earth is the only planet which has water in it. ये पृथ्वी पर रहने वाले हर छोटे बड़े प्राणी की ज़रूरत है. So not just a human being, animals, plants, all the microorganisms, சின்னதுலேருந்து பெரிய animals வரைக்கும் living things, what is needed? Water is needed. पानी की उपयोगिता को समझकर उसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है. So we have to understand the utility of the water and we have to save it. We have to preserve it. So how can you preserve the water? By not polluting it. Okay, the first and foremost thing is not polluting it, not wasting it. What will you do if water is not there at your home? If 2-3 days water is not, what will happen? Do you know how many percentage of water is there on earth? How do you waste the water? Have you ever thought about it? Along with human, who all need water? What are the works that involve water? If water is not there for a day, what will happen to you? How water are getting spoiled? Do you know? Put in the comment section. On daily basis, are you wasting the water? Think about it. How water can be kept safe? Do you know? Put in the comment section. This is the activity for you. Once you have completed this lesson, I'm sure you will get a curiosity to understand, to know the details for these questions. I am sure you will get the curiosity to learn what is the answer for these questions. What we have to learn from this lesson, nature gives us some resources in abundance, but we human beings have to take care of it. We have to save it for our next generation. We have to understand the importance of water. What are the technologies has come which will help us to preserve the water? What are the ways the water is getting polluted? How we can avoid pollution, water pollution? And what are the uses of water? Using the water, how we can produce electricity? How we can manage the water to give water for everyone? So Rajasthan is also a desert place. அதுலேயும் water எப்படி கொடுக்க முடியும்? Using the latest technology, we have to understand how water can be reachable to each and every place. How can we use the water in constructive way? How to preserve the water? How to save the water? How we can avoid pollution? We have to take care of the resources very well. Never waste the water at home, in schools. See that you are not polluting the water. Understand the importance of water. This is what you have to learn from this lesson. Apart from this, we have to understand the vocabulary. We have to understand the pronunciation. We have to improve our listening skill. This is our default learning from each and every lesson. So there is an old tale where a Rajasthani couple who died without drinking water, thinking let the other person drink and live because of the water scarcity, but both had died. So this tale depicts the love which the Rajasthani couple had between one another, but behind that
The another thing which we have to learn from this tale is that importance of water. So through this lesson, we are going to understand the importance of water, daily usage of water, how water is used in the irrigation, how water is used by animals, how we can use the current technology and save the water, what are the different ways to save the water, how electricity is produced using water, how to avoid water pollution, what are the diseases which we can get due to water pollution. So these are the very basic things which we are going to learn from this lesson. Now let's read the lesson. Suraj tap raha tha. The sun was heating. धरती जल रही थी. The earth was burning because of the heat. Okay, அவ்வளோ சூடாக இருக்குது, environment அவ்வளோ ஹீட்டாக இருக்குது. शादी के 2 साल बाद एक राजस्थानी अपनी पत्नी को विदा करवाकर अपने घर ला रहा था. So after 2 years of marriage, one Rajasthani person was bringing his wife from her mother's house to his house. मरुभूमि की यात्रा करते करते पूरा दिन बीत चुका था. मरुभूमि इज डेजर्ट. So he was traveling, the both husband and wife were traveling in the desert and they were spending the whole day. अभी 18 घंटे की यात्रा शेष है. So now again 18 hours of journey is still left out. शेष है ना, नो மீதி இருக்கு, left out. This is a Rajasthani language. हल्क सुखियो है, पानी है? पत्नी ने झिझकते हुए पूछा. हल्क सुखियो मीन्स द नेक इज वेरी ड्राई. गला सूख गया है, क्या पानी है? So is water is there, like that wife is asking her husband with an hesitation. Jijekte means with a hesitation. The wife is asking her husband, like the throat is very dry. Do we have water? हल तो मेरो भी सुखियो है. So even my throat is very dry. मश्क में 2 बूंद पानी रही हो. Mashk is the water bag actually, in which there is few drops of water. ले तू पी, you drink, like that the husband is telling. ऊंट को रोकते हुए पति बोला. So he stopped the camel and told that you drink, there is little bit water in the water bag, you drink. This is the water bag. So they are traveling in the desert. ना, सिर हिलाते हुए पत्नी बोली. Now the wife said, no, you drink. Na, no. So after you are saying yes or no, what you have to do, you have to put an alpa viram, comma should be there. Since the no is said by wife, we have to put in the quotation mark. Sir hilate hue patni boli. So shaking her head, the wife said. So we are giving the pause. Tu pi, you drink. So this is said by wife. So shaking her head, the wife said, no, you drink. You drink, no, you drink. Like that husband and wife were telling one behind the other. कहते हैं कि दोनों में से किसी ने पानी नहीं पिया. So in the tale it is told that no one has drunk the water from that water bag, thinking the other person will drink. और दम तोड़ दिए means they have died. Okay. Can you see the image? The husband is telling you drink, wife is telling no, you drink. Then they have died without drinking the water. राजस्थान की ए लोक कथा. So राजस्थान में ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்க this लोक कथा is old tale, folk tale சொல்லுவோம். folk tale. एक दंपति ना couple के आपसी प्यार means the mutual love का 2 उदाहरण है. So it is an example. So this folk tale from Rajasthan depicts the mutual love which is there between the husband and wife. साथ ही पानी के महत्व को भी प्रकट करती है. Along with that, it also gives the importance of water. It reveals the importance of water. पानी अमृत है. Water is nectar. हमारे शरीर के 2/3 और धरती की 3/4 भाग पानी है. So in our body level இருக்கு 2/3, 2/3. இப்போ நம்ம பாடியை 3 டிவைட் பண்ணால் 2 வந்து வாட்டர் எலிமெண்ட். அண்ட் தர்த்தி எர்த்தை வந்து 3/4. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபுல் வாட்டர். 3/4. ஓகே, இது மட்டும்தான் லேண்ட். 2/3 of our body is water. 3/4 of earth is water. तरबूज में तो 98% पानी है. प्रतिशत मीन्स परसेंटेज. सो इन तरबूज, इन वाटरमेलन, 98% of watermelon is what? Water only. So the body in human being, if you see the human being, it is 2/3
2/3 is water. If you take the earth, then 3/4 is water. And if you take 98% of watermelon is water. See the water quantity. Okay. अपनी दिनचर्या में झांको. So go and peep into your daily routine. पानी का नित्य प्रति के जीवन में बहुत उपयोग है. So the water is used in daily life. नित्य means daily. नित्य प्रति means daily जीवन. Daily life என்ன தேவை? Water is தேவை. நம்மளோட daily routine செக் பண்ணி பார்த்தா daily usage की we need water. तुम पानी पीकर अपने प्यास बुझाते हो. You drink water and fulfill your thirst. रसोई घर मीन्स किचन में कितना काम पानी की सहायता से होता है. सो हाउ मेनी वर्क इज टेकन केयर बाय वाटर. सी लेट्स लिस्ट आउट. चाय बनाना टू मेक टी, सब्जी धोना टू वॉश वेजिटेबल्स, उसे पकाना टू कुक द வெஜிடபிள்ஸ். ஸோ டீ போடுறதுக்கு, வெஜிடபிள்ஸ் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு, வெஜிடபிளை குக் பண்ணுறதுக்கு. ஆட்டா கூந்துனா kneading of the आटा, kneading of the wheat flour or मैदा flour is called आटा गूंदना. बर्तन साफ करना टू वॉश द वेसल्स. क्या ये सब पानी के बिना संभव है? इज दिस वर्क इज पॉसिबल विदाउट वाटर. घर की सफाई टू क्लीन द हाउस, कपड़े धोना टू वॉश द क्लोथ्स, दांत साफ करना टू वॉश द टीथ, नहाना टू टेक बाथ. ये सारी क्रिया, दिस ऑल द वर्क, क्रिया मीन्स वर्क, पानी की सहायता से होती है. विद द हेल्प ऑफ वाटर ओनली वी कैन टेक केयर ऑफ दिस एक्शंस, राइट. बिना पूर्व सूचन, बिफोर गिविंग एनी नोटिस टू यू दैट वाटर वोंट बी अवेलेबल, 4-5 घंटे के लिए नल में पानी आना बंद हो जाए तो कितनी मुसीबत होती है. सो विदाउट प्रेयर इन्फॉर्मेशन, इफ वाटर इज नॉट कमिंग फॉर 4 to 5 hours in the tap, how much of difficulties we have to face. ஸோ தண்ணி வராது அப்படின்னு யாரும் சொல்லலை அப்படின்னா 4-5 hours தண்ணி வரலன்னா நம்ம எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டி வீட்டில் பார்க்குறோம். ये तो तुम सब जानते हैं. yes, we all know this, right? So what are the uses of water? Drinking, washing hands, brushing teeth, taking bath, cooking, watering plants, right? So mother is also cooking in the house. We also need to drink water. We wash using the water. We wash the vessels using water. We take bath. All these things are our daily routines. पानी जीवन का आवश्यक तत्व है. सो वाटर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट. तत्व ना एलिमेंट. मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे, जितने भी जीवधारी प्राणी हैं सबके लिए पानी आवश्यक है. सो इट्स ह्यूमन बीइंग, एनिमल, बर्ड्स, प्लांट्स, एवरीथिंग, whoever has life, for everyone water is needed. So ஹியூமன் பீன் மட்டும் இல்லாமல் அனிமல்ஸ்க்கும் சரி, பிளான்ட்ஸ்க்கும் சரி, பேர்ட்ஸ்க்கும் சரி, எந்த உயிர் வாழ்கிற ஜீவனுக்காக இருந்தாலுமே தண்ணி ரொம்ப முக்கியம். तुम किसी गमले को उठाकर कमरे में रख लो. सो यू टेक द पॉट एंड कीप इट इन द रूम. 4 दिन तक उसमें पानी ना डालो. सो यू डोंट पुट वाटर फॉर दैट प्लांट विच हैज़ टेकन इनसाइड. तो पौधा मुरझा जाएगा. सो व्हाट विल हैपन टू द प्लांट? इट विल ड्राई ऑफ, राइट? वृत्ताइडो இல்லையா? तुम्हें 2-4 घंटे पानी ना मिलने तो तुम कितने व्याकुल हो जाते हो. सो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग वाटर फॉर 2 to 4 hours, वी ऑल्सो बिकम सो रेस्टलेस, राइट? बेचैन हो जाते हैं. ऑल्सो द बर्ड्स ऑल्सो नीड वाटर, एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर. Every creatures, living creatures need water. So we also use water for our daily routine. So if you take the plant and keep inside your house without pouring water for 4-5 days, it will become so dry. अब तोंगिडो, सुरिंगिडो. पानी से ही धरती नरम और उपजाऊ बनती है. With the help of water only, the earth becomes so soft. नरम में soft आऊँ, उपजाऊ में fertile आऊँ इरको. किसान भी वर्षा के बाद ही उसमें हल चलाकर खेती कर पाता है. So after watering, after the rainy season, if you see, the mud எல்லாம் ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் இல்லையா, ரொம்ப முலாயமாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு அப்போ தான் the farmers also use the plowing activity, right? After the rainy season only the plowing activity will happen. वर्षा के बाद ही उसमें हल चलाना मीन्स प्लाव பண்ணுறது. ओके, प्लाविंग, खेती कर पाता है. पौधों को बड़ा करने के लिए भी पानी की आवश्यकता है. इट्स नॉट जस्ट ओनली फॉर प्लाविंग, टू ग्रो द प्लांट्स ऑल्सो वी नीड वाटर. पहले भारतीय किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थे. सो अर्ली डेज द इंडियंस वेर डिपेंडिंग अपॉन द रेन वाटर ओनली
for the irrigation. Sinchai means irrigation. ஸோ தண்ணி பாசறதுக்கு எதில் நம்ம டிபெண்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் அந்த காலத்தில் ரெயின் வாட்டர் இருந்தால் தான். स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आफ्टर वी गॉट द इंडिपेंडेंस लगभग सभी बड़ी नदियों पर बांध बनाए गए. वी कंस्ट्रक्टेड डैम्स. हैव यू एवर विजिटेड डैम्स? इफ नॉट गो एंड विजिट द डैम्स विल सी दैट हाउ मच ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर वी आर सेविंग इन द डैम. बाढ़ के रूप में विनाश लीला मचाने वाली पानी को इन बांधों में रोककर निर्माण कार्यों में लगाया जाता है. सो इफ यू सी इन द डैम्स एंड ऑल வாட்டரை வந்து அப்படியே தேக்கி வச்சுருப்போம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ தட் த வாட்டர் டோன்ட் ஃப்ளோ அண்ட் கெட் இன் டு த ஓஷன். ஸோ த வாட்டர் தட் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் த டேம் we can use it to do constructive work. Instead of it is harming by making flood, we can stop and use the water constructively. So vinasha leela means destruction work stop பண்ணிட்டு we can stop the water and use it for nirman karya constructive work के we have to use the water. पानी को ऊंचाई से गिराने से so if you are going allowing the water to pour from the height so current will be produced. okay, गिराकर बिजली का उत्पादन किया जाता है. we can produce current from that electricity. नहरें निकालकर पानी के बहाव की दिशा मोड़ दी जाती है. see if the water is going like this in the river, here is some place is there where there is no water available, so we can make a stream from here and change the direction of the water flow. இந்த பக்கமும் போகும் இந்த பக்கமும் வாட்டர் ஃப்ளோ போகும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கிவன் ஹியர். ஸோ நெஹரே निकाल कर, नहरें मीन्स कैनल्स, निकाल कर पानी के बहाव फ्लो वाटरोட ஃப்ளோவை ஸோ இந்த டைரக்ஷன்லேருந்து वी हैव चेंज टू दिस डायरेक्शन राइट. वी हैव चेंज द फ्लो ऑफ द वाटर की दिशा मोड़ दी जाती है. मीन्स वी आर टर्निंग द डायरेक्शन ऑफ द वाटर फ्लो. उन स्थानों पर पानी उपलब्ध करवाया जाता है जहाँ इसका घोर अभाव हो. So the places where there is more scarcity of water, in that region we are using this technology of making the streams of the running rivers to the place where water is not available. So in the மாதிரி நம்ம streams follow பண்ணி water is made available to the place where water is not available naturally. जहाँ इसका घोर अभाव होना ரொம்பவே ஜாஸ்தியான non-availability, lack of availability, there is no resources is not there to supply. जैसे सतलुज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकालकर राजस्थान की मरुभूमि को पानी दिया गया. Now identify which engineer is behind this idea to make water available in the Rajasthan. So Satluj நதியிலிருந்து, so the river named Satluj, அதுலேருந்து what we did, Indira Gandhi canal has been made so that the water can be made available to Rajasthan. So find out from Google where the Satluj river flows. See the dam here, see the dam here, how much of forcefully the water is coming out here, right? See, can you see the dam? So for ploughing also we use, for rainy season only we are depending upon irrigation, but now we can change. So this is the Indira Gandhi canal where the water comes to Rajasthan. okay, so it is 649 kilometer long. Indira Gandhi canal எவ்வளோ long? 649 kilometers. This is how the canals are made so that the water direction is changed to some other place where water scarcity is there. Now through the canals we can get water, right? पानी में जीवन देने की शक्ति है. So पानी has, the water has the capability to give power for living. यद्यपि दो प्रकृति ने पानी के आशय भंडार हमें दिए. इट हैज़ गिवन ए अबंडेंस रेन्यूएबल. आशय मीन्स रेन्यूएबल रिसोर्सा கொடுத்துருக்காங்க. आशय मीन्स renewable. It is renewable. We can renovate it. भंडार is store. ரொம்ப நிறைய inventory. store और inventory. So फिर भी शुद्ध पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है. So though we have been given abundantly the water, we don't have much drinking water. கிடையாது. हमारे घरों के नलों में जो पानी आता है वह शुद्ध किया जाता है. So whatever water is sent by the taps are purified ones. उसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए. You should not waste it for any excuses. okay. पानी को प्रदूषित होने से बचाना भी हमारा कर्तव्य है. सो इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द वाटर so that it is not polluted. प्रदूषित मीन्स pollution, वाटर पोल्यूशनலேருந்து காப்பாற்றுறதும் நம்மளோட ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான். गाँव में अभी भी जिस
कुएं से पीने का पानी लिया जाता है, उसी कुएं के आसपास मलमूत्र त्यागने, कपड़े आदि धोने का कार्य भी किया जाता है. So assume this is the well. Okay, இதுதான் அதோட சபுத்ரா. So if you see in the village, இந்த மாதிரி well இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பக்கத்திலே you can see animals doing excreting it. Okay, சில பேர் washing clothes பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, சில பேர் will be taking bath here itself. So all these things pollutes the water, right? ऐसे करने से कुएं का पानी दूषित हो जाता है. The water inside the well becomes contaminated, right? Polluted. दूषित पानी पीने से, if you are going to drink such contaminated water, you may get hyja, typhoid आदि रोग होने की संभावना बनी रहती है. So you can get these two types of diseases when you drink not purified water. So water that we get from the taps are all purified water. இந்த மாதிரி ஒரு கிணறுக்கு பக்கத்தில் someone is washing, someone is putting the excreta, it will harm the water. So if you are not taking care of drinking a pure water, you may get disease like hyja and typhoid. So पानी जीवन का सहारा है. So पानी is water is the important, is a support for life. जीवित रहने के लिए, to be alive, जल का सुलभ होना अनिवार्य है. So accessible இருக்கணும். We should be able to access the water. That is very mandatory. Anivarya means mandatory. What is mandatory for us to live? Yes, water வந்து நம்ம லைஃபோட very big support system. So we should have the balance in this so that everyone is accessing the water. Sulabh means accessing. Anivaryana, it's important. Okay, mandatory. इसलिए प्राचीन सभ्यता का विकास किसी न किसी नदी के किनारे हुआ. So if you see the प्राचीन old culture, the development would have happened near the rivers only. खेती बाड़ी, परिवहन, उद्योग सबके लिए पानी की आवश्यकता है. So what is important for farming? परिवहन is the transportation and उद्योग is for industries. Okay, transportation, industries and for the खेती बाड़ी is farming. सबके लिए, for all these things water is important. इसलिए हमें पानी रूपी संपदा को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए. So hence, because of this, as the water is used in farming, for transportation, for the industries, we have to keep this resource. पानी रूपी ना वाटर மாதிரி இருக்க ஒரு ட்ரெஷர், संपदा, इस हमलोड பொக்கிஷத்தை सुरक्षित, we have to keep it safely. जहाँ भी स्थान मिले, wherever you get the place, पेड़ पौधों लगाएं. You have to plant more trees and plants. वर्षा के होने में वन उपवन सहायक होते हैं. So the Vanna forest, Upavanna the garden. So the garden and the forest will help us to get more rain. Varshana rain. उनसे इस दिशा में बहुत सहायता मिल सकती है. So we can get more water. So when you are doing more plantation, we get more water and we will be able to save our resources. So in the direction, if you plant more trees and plants, we can get more water and hence we can keep it, the water resource, more safely. सहायता मिल सकती है means we can get the help. So எப்படி நமக்கு ஹெல்ப் கிடைக்கும்? வாட்டர் ரிசோர்ஸை சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஒன் அண்ட் உப்புவன், ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கார்டன். ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் இடம் கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் மரம் வளர்த்தோம்னா தண்ணி, மழை நிறைய வரும். So we can save the resources. So hope you have understood the lesson. In the next video we'll see the book back exercise or question answers. Thank you students.